आप पढ़ाए चले गए, ये भी देखा, फिर ये भी चला गया, इसका भीतर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। इम्पैक्ट नहीं हुआ तो आप क्लास दूसरा दिन लेने आए, मेरे को आपका सुनने से इम्पैक्ट नहीं होता है तो मैं दूसरा गलत काम शुरू करूंगा, और तीसरा मैं ही जाकर के क्रिमिनल बनूंगा, बिकॉज आई एम नेग्लेक्टेड इन द क्लास, आई एम नेग्लेक्टेड इन द फैमिली, I am neglected in the society, but God has given me the strength that I can become a leader. So I can become a criminal and I can become a leader. How these criminals, they dictate the society. This is the reason. I got chance to meet Mother Teresa and I came to Calcutta. I had really the opportunity to embrace Mother. Mother, how are you? Can you imagine? I took a lot of photographs. Mother asked me, my son, when you will go to Jesus? Being a Hindu guy, it was really difficult. I only told her, Mother, I will go through my work to Jesus. तो उस समय मेरा मन में था कि I have to bring some changes to this area. And फिर से वही विवेकानंद बोला था कि education is the only can bring the liberate the people, and it is the only revolution which is required among the people. Education. तो मैंने वही सोचा कि एजुकेशन के ऊपर हम काम करेंगे. I like to tell you my childhood. Little go back to the childhood. When I was 4 years old, I met an accident in a cyclone. The asbestos sheets, you know that at time those asbestos sheets they used to use for the roofing purpose, that fall on my head. I was there in the hospital. And when I came out from the hospital, I was totally a disabled person. I developed stammering, I developed thought gap, I developed some time of fear, even 5-10 people, if they are close to me. I used to sweat and I used to get nervous. I like to tell you that I was so miserable because even my saliva used to come out. My other brothers and sisters, they used to ask me that, okay, you go and play in the other room. I am with my friends, because they didn't want me to be there, because this is the, you know that how the social barrier creates because of disability. But I'm really thankful to my father. He tried a lot. He took me to the different part of the country and he tried to get my treatment. Ultimately, he put me to the one coach. He helped me to develop sports, and sports, yoga and the medical treatment both helped me to come up to normal. And I would like to tell you, from 7th, 8th standard, I came back in a normal situation. Because of my father, he was a little senior officer in the government, so I was always being promoted in the class. But I realized in the 8th standard, with my own reflection process, I am answering all the question answer and I am passing, because I have been helped mostly by my father and the people my father was deputed to help me through sports, yoga and different type of medicine. But I was always in search how to repay my father, because I know that I cannot repay my father. But only the thing is that I realized that there are thousands of children, they don't have father like my father. So the question is that if they are in the problem, who would stand him or her to come up and to help? I like to tell you, in the meantime, when I was doing my graduation, one of my friends, uncle, he was a big editor of his newspaper, and I used to go and work there. One day I was asked to go and cover one case where one small child was sold by mother just because of rice and few rupees, 4 or 5 rupees, something like that, and the child was sold to a brothel keeper. I covered that thing, and then I asked
one of the gentlemen, I think Arudha, he was with Ahmedabad that time. Arudha, our job is over. Yeah, our job is to just publish the news, and people they know the whole thing what is happening. I go, what after? And then it came to my ear that okay, this is also not my field. My field is something different, but I was not that time sure that what I should do. While I was with the Bhutan, I was heading the Bhutan program for Bihar, and I was posted in Gaya. And at that time, the Bilkis Latif Sahib was the wife of Governor of Maharashtra. When that team came and they want to see that how we are developing this program in Bihar for the Bhutan land, I was offered by the agencies that I should come Maharashtra. I was actually not interested to come Maharashtra because I am basically from Calcutta, Eastern region. But you know, repeatedly I was asked that I can come and work for the children. I had no background for the children because to work for the children I always used to think that it needs a lot of knowledge. But when I was given the work as a project director with the Balgram in Maharashtra, to spread the Balgram movement activities in Maharashtra, I worked with them. But there also I realized, I studied the child development very carefully. Its legal aspects, its different aspects which really required to support a child. And then I realized that it would be worth if I decide to start one organization. In 1989, I left my previous employment. And 89, I decided that I must register an organization. In 1990, I registered this organization. जब शुरू की तब तो बहुत स्ट्रगल था हमारा, बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा। मेरा 2 बच्चा, उनको लेके पैसा भी नहीं था हमारा पास कुछ भी। मैं यहाँ पर शुरू किया महाराष्ट्र में मट्टी लेकर यहाँ पर आई पास थ्रू लॉट ऑफ ट्रबल, लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज आई एम ए बंगाली. I was always my outlook, my attitude was always criticized. Yeah. Because they didn't like my attitude, they didn't like my way of thinking. और मैंने एक चीज मेरे भीतर में है, बहुत मेरा भीतर अड़ियलपन है. मैं ये काम में आया हूँ because you have not told me. I have come as my own, and I am my master. Correct. You cannot guide me. You cannot dictate me. And I'm right to tell you, I started with 7 orphan children. I constructed one mud house. For 4 years, I lived in that mud house, and that was one of the best period of my life. I enjoyed with the children in the 4 years. From 7th, it went up to 46. We had no infrastructure, mud house, only plain ground. Today, what you see, the trees, not a single trees were there. इधर से मड हाउस शुरू हुआ। दिल्ली वाले सजन जो है उधर से, ये दोनों ही मड हाउस। बाद में टीवी बन गए हैं। कुछ भी नहीं था, ये जगह पूरा जंगल का अंदर। ऐसे भगवान ना किसी किसी से तैयार करते हैं, तुम कहीं भी जाओ कुछ भी कर चलता है। तो ऐसा हम दोनों को भगवान ऐसे ही तैयार किया है। पहले शादी हुआ, उन्होंने बोला मुझे रत्ना हमें गया जाना है, चलो गया में गए। भाषा नहीं आता है, हिंदी कुछ भी नहीं, क्या करूँ। फिर चला लिया, कुछ तकलीफ नहीं हुआ। फिर महाराष्ट्र में आ गई, तो राम के साथ सीता कैसे जंगल में थी, मैं भी ऐसे जंगल में थी। आज कम से कम 33 इयर्स जंगल में हूँ, राम सीता का जैसे। कुछ मतलब उस टाइम ऐसा ये नहीं था, ये अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, ये नको वो कुछ नहीं था, सब चलता है।
84 में हम महाराष्ट्र में आए ना, तो बारिश इतनी थी लोनावाला में। हम पहली बार 15 अगस्त को थोड़ा सा शान दिखाई दी, तो बहुत खुश हो गई। फिर झट ड्रेस चेंज करके पहाड़ी में घूमने चले गए। हमने कहा बहुत अच्छा शान है। 2 मिनट भी नहीं गई, इतनी बारिश हो गई थी। 5 मिनट के लिए मुझे शान दिखाई दी। फिर बहुत गुस्सा आ गया। पापा को लेटर नहीं कर, पापा हम चेरापूंजी में हैं। क्यों? उन्हें कुछ नहीं दिखता पापा, शान भी नहीं, मुन भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मुझे मुन दिखाई दिया कब? कोजागुरी लक्ष्मी पूजा होता है ना, उस दिन मुझे मुन दिखाई दिया। इतना अच्छा लगा उस दिन हम चांद देखने का बाद। फिर पापा को लेटर लिखा, पापा आज मुझे चांद दिखाई दी, तो अच्छा लगा। सान और मुन का याद आया। So we'll go around this thing and any particular memory. जल्दी बात करती हूँ। हाँ अच्छा है मैम। Any particular memory you'd like to share about इधर की? Some distinct thing, something that was जो कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं इस टाइप का। बहुत रह जाती। उस टाइम में बताऊँ, हमारा पास ना इतना पैसा नहीं था बच्चों को बहुत अच्छा से खाना खिलाने के लिए। तो हम लोग फंड रेज करते थे, डोनेशन में लाते थे। तो इधर ना कुछ ग्राउंड भी नहीं था, तो पपाई का झाड़ बहुत हुआ था, पपाई और बहुत बड़ा बड़ा पपाई भी लगा था। तो बच्चों को हमेशा 1-2 दिन छोड़ के भी पपाई का सब्जी बना के खिलाते थे, कभी अलग अलग में पैटर्न में। जैसे हमारे बेंगोली लोगों का अलग अलग, जिसको बोलते हैं दम, पपाई का दम, फिर पपाई को ऐसा खींच के उसकी अलग टाइप का। तो एक ऐसा बहुत उन आंटी रोज पपाई। अभी क्या करूँ, तो एक दिन क्या पपाई को बहुत अच्छा से स्लाइस कट के शक्कर डाल के चटनी बनाए। हमारा बंगाली उसको प्लास्टिक चटनी बोलते हैं, इनको पता है। तो उन्होंने बोला अरे आंटी क्या है, नया डिश है। हमने प्लास्टिक की चटनी। बोला हाँ, तो हम कैसे करें? तो पपाई का वैरायटी खिला के बच्चों को मतलब एक दिन दम पपाई, एक दिन ऐसा है, एक दिन चटनी बने के मीठा चटनी जैसा। तो बच्चे बहुत एंजॉय करते थे, अभी भी बच्चे याद करते हैं प्लास्टिक की चटनी। सबसे बड़ा बात कि ये काम का कोई रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं सब। उस टाइम क्या होता था, लोग पूछते ही नहीं थे। कहीं हम कुछ प्रोग्राम में गए हैं, ये बालराम में काम करते हैं, तो इतना कुछ नहीं था। अभी इतने अवार्ड वगैरह ये सब मिला, अभी इतने ही हो गया। कितनी महाराष्ट्रियन लोग हमारे पास पूरा काम करते हैं। गाँव में भी अभी आधा से ज़्यादा लोग गाँव के ही हैं हमारे पास, लेडीज़ वर्कर्स, मेल फीमेल सब। अभी कुछ तो भी लोग ठीक ठाक हमारा साथ बात भी करते हैं, या तो गाँव के लोग भी बात करते हैं ठीक से। And the best skill is that I always tell that you believe that you will be able to do this work. Once you believe that you will be able to do this work, आपके लिए कोई आप automatically you will get all the formula, you will get the all backup, you will get the all support. Only you should have an intention to do this work. Intention to do this work. और भगवान बहुत कम दिन दिया है। आप मत सोचिए कि हमको 50 साल 30 साल 40 साल काम करने को मिल रहा है। दैट इज नॉट एनफ। तो हमारा प्रेयर में रहता है कि हमको और थोड़ा सा स्ट्रेंथ दो, ताकि मैं 2 दिन का काम 1 दिन में कंप्लीट कर सकूँ। अगर मुझे 30 साल काम करना है और 40 साल काम करना है, तो मैं 80 साल का काम कर सकूँ। एक मेरे पास एक लड़की आई, अंकल मैं अभी अच्छा काम करता हूँ। बोले अंकल जब आप शुरू किए थे ना, उस समय मैं वॉलंटियर होकर आता था। बोले तुम कहाँ पढ़ती थी? बोले मैं DC स्कूल लोनावाला में पढ़ता था, मेरा नाम सालू सूद है। अभी क्या करती हो? मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं बहुत अच्छी नौकरी में हूँ। अच्छा। अंकल मैं आपको पैसा देना चाहता हूँ, आप क्या करेंगे? हम लोग ठीक है, मेरे को जमीन के लिए पैसा दो, मैं जमीन खरीदूंगा। तो मैंने 5 एकड़ जमीन था, उस समय 40,000 रुपया एकड़ था। तो मैंने 5 एकड़ जमीन खरीदा और एक क्लासरूम बनाया। क्लासरूम बना करके बच्चे को लाना शुरू किया। आप जाइए, एक बार देखने जाइए, ट्राइबल बच्चे लोग के लिए। नमस्कार, मी चाळक दत्तात्रय मेघराज,
भांबर्डे संपर्क भांबर्डे प्रकल्प शाळा आणि वसतिगृह मध्ये गेली 15 वर्ष झालं मी इथं प्रकल्प अधिकारी आणि शाळेचे मुख्याध्यापक काम करत आहे. जवळपास 311 विद्यार्थी आहेत आणि मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह आहे. साधारणतः इथं शाळेचा मिळून एकूण 18 स्टाफ काम करतो. आज पुणे जिल्ह्यामध्ये एक उत्कृष्ट शाळा म्हणून निवडली गेली आहे. लवकरच आम्ही ISO मानांकन आम्हाला प्राप्त होणार आहे आणि चांगली शाळा इथं विविध उपक्रम राबवतात. उपक्रमशील शाळा म्हणून हे केलेले. आमच्या शिक्षकांना शाळेला वेगवेगळे पारितोषिक मिळालेले आहे. इथले विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याच्या नेटबॉल स्पर्धेमध्ये पण खेळलेले, महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ विश्वास है. मैं कलकत्ता से आया हूँ. मैं इधर 6 साल से बच्चों को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देता हूँ. मैं फुटबॉल, नेटबॉल, वॉलीबॉल की 3 गेम में स्पोर्ट्स बच्चों को डेवलपमेंट के लिए ये करता हूँ. और बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे खेलते हैं. सभी ट्राइबल एरिया का बहुत ही दुर्गम भाग का बच्चे हैं, बहुत ही गरीब बच्चे हैं. ये बच्चे स्पोर्ट्स में भी अच्छा है. हमारा स्कूल 5 साल से डिस्ट्रिक्ट में चैम्पियन हो रहा है. इथं दरवर्षी 10वी आणि 12वीचा निकाल 100% लागतो. आम्ही एकाही विद्यार्थ्याला नापास करत नाही आहे. या ग्रामीण भागातल्या कातकरी आदिवासी विद्यार्थ्याला आम्ही काही केली तर प्रवाहात आणलेलं आहे आणि त्यांना मोफत सर्व शिक्षण पूर्ण देऊन, शैक्षणिक साहित्य देऊन त्यांना आम्ही शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले. So our main thrust area is that the development where we give the different type of skill. Our vocational training center, which is one of the important centers for skill development for the student. Today, for this purpose, Mr. Mikhail, who is the head of the UNDP skill development for India Asia region, he was with me this morning at Samparka Center, and we are talking how we can add activities for the youth, for the ladies, for development. The main purpose is that the changes what we talk, these changes only can be brought by the youth. We love our staff because they are our main strength, they are the main pillar of promoting these activities. We organize various training programs, various exposure for that staff. Mrs. Banerjee also take a group of house mothers to the various places of India to show them how to change their life, because they also need support. And when they become fresh, when they upgraded, they contribute to our children and our families. हर क्लास में आप चाहे पंजाब का स्कूल लीजिए, चाहे केरला का स्कूल लीजिए, महाराष्ट्र का स्कूल लीजिए, हर क्लास में 3, 4, 5 बच्चे जो होते हैं जिसका लेवल बहुत कम रहता है. जो आप टीचर बता रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा. ये हर क्लास में है, चाहे आसाम का स्कूल हो चाहे राजस्थान के स्कूल. हाँ, हर क्लास में. इसका कारण क्या है? कैसा इसका रूट कॉज में जाएंगे, कैसे करके उस बच्चों का ब्लॉकेज को निकालेंगे, कैसे करके उसको कॉन्फिडेंस देंगे, कैसे करके उसमें बता सकते हैं. जैसे मेरे पिताजी मुझे भी कॉन्फिडेंस दिया था बोल करके, जो आदमी 10 आदमी के साथ बात नहीं कर सकता था, he could not believe. Even when I was a graduate class, if I have seen a girl and I felt that I propose her, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं I can propose. जब मेरे पास कॉन्फिडेंस आया, because of my father, he gave me the confidence that I can change me, I can change the world. डिपार्टमेंट ओपन किया और उसके बहुत ही अच्छे, हम स्कूल के हर स्कूल में कोशिश कर रहे हैं एक टीचर काउंसलर बने, हर स्कूल का एक टीचर. क्योंकि अभी हमारे पास उन्हें पैसे नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है, स्कूल के पास भी पैसा नहीं है, लेकिन काउंसलर का जरूरत है.
जरूर एक भी अगर काउंसलर महीना में एक बार भी थर्ड क्लास टीचर से बात करेगा, कौन बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, उसका पेरेंट्स को बुलाएगा, उसका फैमिली को बुलाएगा, उसका एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा, उसका सब कुछ स्टडी करने के बाद अगर उस बच्चों को वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे पाए कि आप इस तरह से देख रहे हैं ना, आपका क्या होता है कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस चिल्ड्रन, हाउ दे, ये बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उसका भीतर उनका रिफ्लेक्शन प्रोसेस ओपन नहीं होता, उसका जो ब्रेन है वहां पर जाकर के वो दे डू नॉट एंटर इनटू देयर स्क्रीन। आज क्या होता है कि आप पढ़ाए चले गए, ये भी देखा फिर ये भी चला गया, इसका भीतर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, इम्पैक्ट नहीं हुआ तो आप क्लास दूसरा दिन लेने आए, मेरे को आपका सुनने से इम्पैक्ट नहीं होता है तो मैं दूसरा गलत काम शुरू करूंगा, और तीसरा मैं ही जाकर के क्रिमिनल बनूंगा, बिकॉज आई एम नेग्लेक्टेड इन द क्लास, आई एम नेग्लेक्टेड इन द फैमिली, आई एम नेग्लेक्टेड इन द सोसाइटी, बट गॉड हैज गिवन मी द स्ट्रेंथ दैट आई कैन बिकम ए लीडर, सो आई कैन बिकम ए क्रिमिनल एंड मैन कैन बिकम ए लीडर। हाउ दिस क्रिमिनल्स दे डिक्टेट द सोसाइटी, दिस इज द रीजन। I was in my post-graduation doing rural development in Javier Institute of Social Science in Ranchi. I came to the Sishu Niketan. There I got chance to meet Mother Teresa and I came to Calcutta. I had really the opportunity to embrace Mother, Mother, how are you? Can you imagine? I took a lot of photographs. Mother asked me, my son, when you will go to Jesus? Being a Hindu guy, it was really difficult. I only told her, Mother, I will go through my work to Jesus. दो से आंसर कितने हैं? दोनों आंसर कितने? हाँ? 5 का प्लेट 3, 5 का प्लेट 5, 3, अडीच काटले 1 आणि हे काटले 2, 3 गुणा 2 6 आणि हे किती 1 गुणा 5 6 गुणा 5 बरोबर ना? गलत किया है ना भाई? शुक्रिया ना? मैं आपको एक मजा में बात करूँ। एक दिन मैंने एक गाड़ी लेकर के रास्ते में खड़ा हुआ, एक लड़की पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के दौड़ते दौड़ते आ रहा था। मैंने ड्राइवर को पूछा, तेरे पास लाइसेंस सब तो है ना रे भाई? वो पुलिस दौड़ते दौड़ते आ रहा है। आकर के उसने दरवाजा खोला, मैंने सोचा और थोड़ा सा, मैं थोड़ा इतना एग्रेसिव कैसा है हो गया है, और लड़की मेरे पैर में हाथ दिया। And so I said that, can you recognize me? आज सचमुच में जो मैं आपको बताता रहा हूँ कि मैं कहीं पर भी आज इस इलाका से जाता हूँ, मेरे गाड़ी अगर कोई रास्ते पे कोई बच्चा आकर के बोलता है, सर आई वॉज योर स्टूडेंट, और वो कभी कभी अपने बीवी बच्चे को भी मेरे पास लाता है, सर आई वॉज योर स्टूडेंट, आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू। हम पहले यानी कि हमारे घर की जो कंडीशन है वो बहुत मतलब नीचे लेवल की थी, पर हम इस प्रोजेक्ट में आए तब से हम लोगों को अंकल ने बहुत सारे फैसिलिटीज़ दी, यानी कि हमको जो स्कूल के लिए जो मतलब बुक्स कहो, कुछ कपड़े, यूनिफॉर्म, रहने की जगह, सब हमको अंकल या इस संपर्क प्रोजेक्ट में सब दिया है। तो हम अगर यहाँ पर नहीं आते तो हम 10 क्लास तक नहीं पहुँच पाते। अभी हम 10 क्लास में है, और अगर हम घर से यहाँ पर नहीं आते तो शायद हम 10 क्लास में नहीं अभी होते, अभी कहाँ पर कुछ काम करते होंगे।
आप अभी आगे 10th के बाद क्या करना चाहते हैं? 10 के बाद अभी कॉलेज में? कॉलेज के बाद कुछ सोचा आगे जाके क्या करना है? क्या क्या करना है बता? हाँ, पुलिस बनना है। अरे वाह! और आपको? आपको दोनों को पुलिस बनना है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब हम लोग सब आना थे ना, फिर इधर के हम लोग को सब घर जैसा प्यार देते कि हमारे एक पापा जैसा, मतलब हम हमारे साथ सब लोग आके बैठते, मतलब हमारे एक घर में पापा आता है अपने साथ बैठता है घर में, वैसे अंकल हमारे बिहेव करते हैं हमारे साथ। और इधर का पूरा मौसम विसम सब अच्छा है, मतलब लड़के लोग में अपने सब बहनें बोल के अपन रह भी सकते, बड़ी बहन और छोटी बहन भी। और इधर की जो स्टाफ है अपने माँ जैसे, मतलब हमको इधर एक घर में माँ रहती है, वो हमें हमारे माँ जैसे ये करती है, मतलब पूरा हमारा सुबह से रात तक का वो पूरा देखती है। और हमको सिखाने को एक इधर टीचर रहती है, फिर वो हमारा पूरा सिखाने को एजुकेशन का पूरा देखती है। और बस